a topic that is a higher order linear differential equation with constant coefficients. This comes under the topic that is differential equation. So here we are finding the pi. How to get the rules? There are some rules to get the pi of some by shortcut method that we are going to see. So we reduce the given higher order equation into the symbolic form. That symbolic form is f of d into y equals to x, where the d stands for the ddx, derivative with respect to x. Now to find out the pi will be given as a pi is nothing but the particular integral. It is given by the formula 1 upon function of d. This function of d we write in the denominator, into it is the RHS part, it is x, and x we know that it is a function of x only or maybe a constant. Okay, so this is the formula for the pi. Now we are having different rules to find out the pi. First rule is when we are having x as a exponential function. This is the exponential function e raised to the power ax. The pi will be then, it is pi equals to 1 upon function of d into x. X is what? E to the power ax. It is a very simple case. In this case what we do, I just replace this d by coefficient of x, that is a. So we will have here then it is f of a e to the power ax. This will be our required pi. Okay, but provided this should not be 0, that is f of a should not be equals to 0. Because if it is 0, we have 1 by 0 and 1 by 0 is not defined. Okay, so we will not have a pi then. Okay, but sometimes we may have there may arise a case such that f of a will be, it is what, 0. ऐसे cases रह सकते हैं. That time what we do, I multiply to the left by x and then I take a differentiation of this denominator with respect to the d, that is f dash of d. Okay, this we have to do कब, जब f of a equals to 0 है. Otherwise this will be our pi. Okay, into that e to the power x, that is as it is. Again the same case we'll do here. D will be replaced by a. We get f dash of a, and this will be our required pi if this is not equals to 0. That is denominator is not equals to 0. So that time this is our required pi. But again if the denominator is 0, that time we again multiply with respect to the x to the left. That will be now it is x square. और यहाँ पे हम इसको differentiate करते हैं f dash of d को. That will be what, f double dash of d. Okay, into e raised to the power ax. Again same thing we will do. I replace the d with this a. I get the f double dash of a, and this will be our required pi, provided denominator is not equals to 0. Likewise we have to go further जब तक हमको एक नॉन जीरो और एक्यूरेट pi नहीं मिल पाता है. ओके, इफ इट इज अगेन 0, I multiply by x, again take a derivative, again replace the d by what, a. Just one thing you remember here, we are replacing in the exponential function the d with coefficient of x, that is a. This is the simple thing you have to remember. Okay, now further the second case, when we are having x, that is RHS part, as a sin ax or cos x. This is applicable only, as well as for it is sin of ax plus b or cos of ax plus b. इसके लिए भी applicable है. So we take this one, first one. So pi will be 1 upon function of d, sin x or cos x. So in this case what we do, we try to make the denominator as a function of d square. मतलब उसमें हमको d square लाना पड़ता है. Okay, अगर d square नहीं है तो we have to make the denominator as a function of d square, and that we do by the rationalization. Okay, we will see that in the problem how to do the rationalization. So we take a we just convert this denominator as a function of d square if it is not there, and then d square is replaced by minus a square. Exponential में direct replacement था, d is replaced by a, but whenever we are having sin and cos, that time we have to replace the d square by minus a square. And what is this minus a square? In the sin ax, the a is nothing but the coefficient of x in the angle. Okay, यहाँ पे इसका हमको square करना है, that will be the a square, then multiply by the minus sign, that is minus a square. जैसे I have told you, if I am having a sin 2x suppose, okay, so that time d square will be replaced by what? That will be 2 का square, that will be 4, multiply by the minus sign, that is minus 4. So I will replace the d square by then it is minus 4 whenever we are having a sin 2x. Likewise now again the same thing we will do here, that is this denominator should not be equals to the 0, that is phi of minus a square is not equals to 0. Then this will be our required pi, that is particular integral. Okay,
बट समटाइम्स अगेन देयर में बी द केस दैट इट इज 0. अगर ये 0 हुआ, आई मल्टीप्लाई टू द लेफ्ट बाय x, I take the derivative of this quantity, of this phi of d square, that is phi dash of d square, again replacing the d square by minus a square, provided this quantity should not be equals to 0. But again if it is 0, again I am multiplying by dx, it will be now x square, again take a derivative, that will be now it is phi double dash of d square, again that d square will be replaced by minus of a square. Okay, and this will be our required pi whenever the denominator is not equals to 0. कंटिन्यू द प्रोसेस. अगर फिर से 0 आता है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन वी रिप्लेस द डी स्क्वायर बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर. ओके, सो दिस वे वी कंटिन्यू द प्रोसेस टिल वी गेट द डिजायर्ड पी आई. यहाँ तक आपको करना है. तो दो केसेस हमने अभी देखी है. एक में जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहता है, सो दैट टाइम इन द डिनोमिनेटर d इज रिप्लेस्ड बाय a, और साइन और कॉस में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं. अगर नहीं है तो, अगर है तो इट्स ओके, देन डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ए स्क्वायर. एक्सपोनेंशियल में d इज रिप्लेस्ड बाय a, साइन और कॉस के अंदर d स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर. ओके, वी आर सीइंग नाउ इट इज रूल्स टू फाइंड पी आई. नाउ द नेक्स्ट केस, द टू केसेस वी हैव सीन, one for the exponential function, one for it is sin and cos. Third case we are having it is x equals to x to the power m, where m being a positive integer. If I say m is a positive integer, means this will be the polynomial of degree m. Okay, so the pi will be 1 upon function of d x to the power m according to the formula. Now in this case what we do, to the function of d I write down into the form 1 plus phi of d. Okay, by taking the lowest degree term outside. एक लोएस्ट डिग्री टर्म जो भी रहेगा दैट वी टेक आउटसाइड, और उसको फिर 1 प्लस के फॉर्म में लिखेंगे हम. ओके, और इसको देन वी टेक टू द अप इन द न्यूमरेटर, दैट विल बी 1 प्लस फाइव ऑफ डी टू द पावर माइनस 1. ओके, एंड वी विल एक्सपांड दिस टर्म बाय यूजिंग द बायनोमियल एक्सपांशन. अब उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. दो फॉर्मूला आपको याद रखना है इसके लिए, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1. अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 है, तो by using the binomial theorem we can expand this quantity as 1 minus x plus x square minus x cube plus x to the power 4. Means we are going with the alternate sign and increasing the power of x. अगर मेरे पास है 1 minus x to the power minus 1, if it is minus here, all quantity will be it is what, positive, and we write down the formula as 1 plus x square plus x cube plus x to the power 4 plus goes so on. Is it okay? दिस टू फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बिकॉज ये 1 प्लस के फॉर्म में है. ओके, 1 प्लस एक्स, तो एक्स विल बी व्हाट, फंक्शन ऑफ डी. सो आई एक्सपांड दिस क्वांटिटी दैट इज 1 प्लस फंक्शन ऑफ डी टू द पावर माइनस 1 बाय यूजिंग द बायनोमियल एक्सपांशन. और आपको कब तक एक्सपांड करना है उसको, वी आर हैविंग द पावर ऑफ एक्स, व्हाट इज इट इज m. सो वी विल एक्सपांड दैट 1 प्लस फंक्शन ऑफ डी टू द पावर माइनस 1 अप टू द d टू द पावर m. d टू द पावर m तक एक्सपांड करेंगे हम इन असेंडिंग पावर्स ऑफ d. असेंडिंग पावर्स ऑफ d मतलब d स्क्वायर d क्यूब लाइकवाइज. ओके, और कहाँ तक करना है, d टू द पावर m तक. और सामने क्यों नहीं करना है, बिकॉज सपोज इफ आई टेक द एग्जांपल वेयर वी आर हैविंग इन प्लेस ऑफ x टू द पावर m एज इट इज x स्क्वायर. ओके, और मैं एक्सपांड करके फिर उसको एक्सपांड करूँगा कब तक, इट इज अप टू d स्क्वायर तक. क्यों, बिकॉज इफ आई टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द x स्क्वायर, व्हाट विल बी, इट इज 2x. If I take the one more derivative, d square means second derivative. Agar if I take one more derivative, that will be what it is, 2. But if I take the third derivative of that, and that will be then it is what, 0. मतलब d cube क्या हो जा रहा है, 0. So बाकी की टर्म क्या होने वाला है एक्सपांशन में, 0. So that's why we leave all that term and we expand only up to the is what, d square. So that's why here to this term we are expanding up to the d to the power m only, because सामने के टर्म जो m plus 1 के रहेंगे that will become 0. So that's why we are leaving that term and expanding only up to that is d to the power m. Okay, now this is the case for when we are having the x as a polynomial of degree m. Now next case, when we have x equals to e to the power ax into v, and this v I am mentioning here that may be a sin, cos or x to the power m. इन तीनों में से कोई भी रहेगा, तब आपको एक केस अप्लाई करना है. हमने फर्स्ट केस देखा था, फर्स्ट केस में सिर्फ था हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ओके, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, सम फंक्शन ऑफ x, इट इज v.
So this case, in this case what we do, मैं will take this e to the power x to the, it is left में लेके जाएंगे, and simultaneously I replace the d with d plus a into it is what then further written as v, और v is what, it is your sin cos और x to the power m. तो ये केसेस तो हमने अभी सॉल्व की हुई है इसकी, तो प्रीवियस केसेस आप अप्लाई करेंगे टू गेट द रिक्वायर्ड पी आई. सो जस्ट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, टेक द एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू द लेफ्ट एंड साइमल्टेनियसली रिप्लेस द d विद व्हाट, d प्लस a. जो फर्स्ट केस था उसमें हम d को रिप्लेस करते थे डायरेक्टली a से टू गेट द पी आई, बट यहाँ पे सम फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाइड है, तो उसमें आपको लेफ्ट में ले जाके d को रिप्लेस करना है d प्लस a से. क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट केस एंड द fourth case, and this is the important case. In maximum time the question is over this case in the examination. Then we move to the next case, fifth case, when we have x as it is x into v, and v is strictly a sine maybe or a cos, sin x or a cos x. So that time we are having a standard formula, just remember that formula. It is x 1 upon function of d we have written into v, it is x into v. So we have written first of all x, then 1 upon function of d into v minus, then put here f of d, then f dash of d, it is what, whole square into it is v. We do okay, I have doubt actually over the formula, यहाँ आपको शायद f dash होगा, this is f of d square, this is the formula, this is the f dash of d in the numerator, and it is f of d whole square into it is v we are having. Then applying the previous cases, that is of sin and cos, to get the required pi. Please make correction. Then we move to the general case when we are not it is not possible to get the pi from that previous cases. मतलब अगर exponential function नहीं रहता है, sin cos नहीं रहता है, या फिर polynomial नहीं रहता है, that time we move to the general case. General case is applicable to all cases. tan आ सकता है, cot आ सकता है, sec आ सकता है, या अदरवाइज बाकी function of x भी आ सकते हैं. Okay, so in general case what we do, to the given fraction, that is this fraction 1 upon function of d, we factorize this denominator into the linear factor, that may be of the type d minus a and d plus a. Okay, उसके बाद partial fraction करते हैं हम उसका, और partial fraction करने के बाद I apply this two formulae, 1 upon d minus a into x, the formula will be e to the power ax integration of e to the power minus ax x into it is dx. Then here if it is we are having 1 upon d plus a है, तो formula will be e to the power minus ax इंटीग्रेशन, यहाँ पे अपोजिट साइन के साथ e to the power ax x into dx. ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको अप्लाई करना है आफ्टर डूइंग द पार्शियल फ्रैक्शन, एंड देन जस्ट कैलकुलेट दिस इंटीग्रल, एंड देन वी हैव द पर्टिकुलर आंसर by using the general case for the pi. And complete solution, we know that it is nothing but the combination of CF and the pi. The complete solution is given by y is equal to CF and the pi. CF stand for the complementary function, pi stand for the particular integral. So that gives the complete solution then for the higher order linear differential equation with constant coefficients. ठीक है.